guys, what's up? Welcome back to my channel. My name is Mansi and I really hope you all are doing good today. So in today's video, we are gonna celebrate one of my most favorite brand's birthday, and that is Plum Goodness. So as you all read by the title that Plum has turned 9 this year, so happy birthday Plum. And as you guys all know that Plum मेरा one of the most favorite brand है. अगर मैं उसकी स्किन केयर की बात करूँ या मेकअप की बात करूँ, हर चीज़ में Plum has been one of my most favorite brand. Plum is India's first vegan brand and with that it is cruelty free, parabens free and toxins free. मैं Plum के products बहुत सालों से use कर रही हूँ and सारे के सारे products मुझे कभी disappoint नहीं किया है. They have always worked amazing for my skin and I just love it. And also अब Plum ने अपनी baby range भी चालू कर दिया, that is baby Plum, so that is also amazing. And so मुझे जैसे ही पता चला कि Plum की सेल चालू होने वाली है, I have got few products from them. So yeah, एक एक करके सारे products मैं आपसे रिव्यू करती हूँ. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हो, so please consider to subscribing to my channel and also press the bell icon so whenever I post any new video, you get notified. And now, without wasting more time, let's get into the video. So these are all the products that I was eyeing from a really long time. And I am so thrilled and excited to share with you guys the exclusive PR hamper that I have received from Plum. Really, so let's start off with the face serum. So this is the inner packaging and can you see how beautiful this packaging looks? So it is Plum's Niacinamide 5% face serum. So इसके पहले भी मैंने Plum का 10% Niacinamide serum use किया था जो actually बस थोड़ा सा बचा है and this was amazing. It helped me improving my skin texture, but let's see how this works. This serum also contains rice water but इसमें additional है आपका amino acid that will help you in increasing your glow, boosting your glow and also clearing out the skin texture. This bottle contains 30 ml of the product. Let's see how its texture is. So I'm gonna just take a few drops of the serum on the back of my hands and by touching it and blending it out, it's very smooth, very lightweight. I can feel it, it's very lightweight and it's like a water texture. So you can see. एंड ये ना बिल्कुल भी स्टिकी एंड ऑयली फील नहीं हो रहा है. इट्स फीलिंग लाइक अ वाटर, लाइक बहुत स्मूथ लग रही है मेरी स्किन. सो लेट मी जस्ट ब्लेंड इट आउट एंड शो यू हाउ इट्स गोना लुक आफ्टर ब्लेंडेड. ओ माई गॉड, माई हैंड्स आर फीलिंग सो सॉफ्ट एंड बहुत स्मूथ लग रहा है मेरा हाथ यहाँ पे अभी. एंड मैं एक बार आपको साइड बाय साइड दिखा देती हूँ. लाइक ये हाथ में अलग ही एक ग्लो आ गया है एंड दिस हैंड इज लुकिंग लाइक डल. बट अब मैं इसको अप्लाई करके देखती हूँ. वन ड्रॉप है, वन ड्रॉप here and one drop on my forehead. I'm going to just blend this out. Instantly feeling that ये कितना smooth कर रहा है मेरे skin को. Like I can clearly feel it. And can you see that glow? My God. एंड ट्रस्ट मी, बिल्कुल भी ऑयली फील नहीं हो रहा है मुझे अपने फेस में. इट्स जस्ट लाइक अ वाटर बट इट हैज मेड माई स्किन वेरी स्मूथ एंड इट हैज कम्प्लीटली अब्जॉर्ब इन टू माई स्किन लाइक इन सेकेंड्स. आपके सामने मैंने अनकट वीडियो है ये, आपके सामने मैंने ब्लेंड किया एंड इट्स very smooth. Like wow, I'm just loving how it feels on my skin. एक ही बार के यूज में मुझे ये प्रोडक्ट कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया. सो आई एम गोना यूज दिस एवरी डे एंड मैं आपको फिर एक और एक रिव्यू दूंगी. बट फॉर नाउ आई एम जस्ट लविंग दिस प्रोडक्ट. जो ये वाला सीरम था ये भी बहुत अच्छा था स्किन में. अगेन मेरे को ये अपने पोर्स के लिए बहुत अच्छा लगता था बिकॉज ये मेरी स्किन को बहुत स्मूथ कर देता था. बट ये वाला प्रोडक्ट मुझे स्किन में हाइड्रेशन दे रहा है, ग्लो दे रहा है, मेरे पोर्स भी क्लोज कर दिया है इसने. लाइक इट्स गिविंग अ वेरी healthy glow to my skin. So for this serum I'm gonna rate 9 out of 10 because this product is so amazing. Oh my god, I totally love this. Now let's move on to the next product and the next product is their lipstick. You guys know from skincare ho ya makeup ho, they nail everything. Like मैंने ये लिपस्टिक को पहले भी ट्राई आउट किया है. आई हैव देयर 3 शेड्स ऑलरेडी एंड दिस टाइम अगेन आई हैव ऑर्डर 3 शेड्स, लाइक 3 अमेजिंग शेड. एंड मैंने हर फैमिली का एक शेड लिया है. लाइक आई टेकन अ न्यूड, अ पिंक एंड अ रेड. सो मैं आपको इसके बारे में इन डेप्थ रिव्यू देना चाहती हूँ. सो द लिपस्टिक आई हैव गॉट इज प्लम मैट इन हेवन liquid lipstick. The shade that I got is 123 Cinnamon Pop.
then 138 Silly Chili, and the last shade I've got is 128 Very Berry. Now ये लिपस्टिक्स मैंने पहले भी ट्राई कर चुकी है and इसका मैं आपको एकदम क्लियर रिव्यू दे सकती हूँ. These lipsticks are very 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 long lasting. First thing is that. Secondly, they are totally smudge proof and budge proof. Like मैं इसको लगा के खाना खा सकती हूँ and it's not gonna move anywhere, like anywhere. And जब आप इसको लिप्स में लगाते हो, it doesn't even feel like आपने कुछ लिप्स में लगाया है. Like it feels so comfortable on the lips. आपको कुछ लगेगा ही नहीं आपने लगाया है. And they are very 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 soft and very long lasting. Trust me on that. So let me show you swatches of all these three lipsticks. So first I'm swatching Cinnamon Pop. It's a very amazing brown peachish nude shade and you can see how pigmented it is. Close up the thickness is 128 and that is very berry. It's a very beautiful purple, like a dark purple shade. And मुझे इस टाइप का कलर बहुत टाइम से लेना था for creating makeup look. Like I can create a very amazing monochrome look and that is pigmented. Like wow. 138 Silly Chili. It's an amazing, very beautiful, very gorgeous red shade. इसके पहले मैंने इसका एक red shade लिया था जिसका मैं नाम अभी भूल चुकी हूँ. But oh my god, like मैंने एक स्वॉच किया है and let's do a challenge. मैं eyes close करके ना इनमें से कोई एक शेड चूज करूंगी and let's see कौन सा शेड आता है. Let's pick now. Let's pick this one. फिर ना लिपस्टिक के पैकेजिंग की बात कर लेते हैं. ये लिपस्टिक की क्वालिटी, लाइक पैकेजिंग की क्वालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लाइक बहुत अच्छी लग रही है. एप्लीकेटर इज ऑल्सो वेरी अमेजिंग. इट्स वेरी बेंडेबल, सो आप आराम से हर कॉर्नर में लिप्स के अप्लाई कर सकते हो लिपस्टिक. एक लेयर लगाया है, इट्स सो पिगमेंटेड. ऐसे ना वन स्वॉच वाली लिपस्टिक्स बहुत अच्छी लगती है. लाइक एक बार में एकदम ओपेक कलर आ जाए जिसमें. You see how pigmented that is. Now मेरे lips जो है बहुत discolored है. Like I have dark lips. Can you see how nicely it has covered my lips completely? Now let's wait until it dry out and then see कि ये waterproof है, transfer proof है या नहीं. So now I'm gonna give you a little close up of these lipstick. Can you see lips के ना cracks में ना fill नहीं हुई है and my lips are looking very very smooth. Like एकदम एक layer apply हुई है lipstick की perfectly and it's not sticky at all. Now let's see if it's a transfer proof lipstick or not. So no staining. And अभी मैंने सिर्फ ट्रांसफर टेस्ट किया था बट मैं इसको अब रब करके दिखाऊंगी आपको. मैं बहुत ही जनरसली बहुत ही अच्छे से इसको रब कर रही हूँ and it's smudge proof also. So what else do you need in a lipstick? And trust me, मुझे फील नहीं हो रहा है कि मैंने लिपस्टिक अप्लाई किया है. It's so comfortable on my lips and so no doubt I'm gonna rate this lipstick a 10 out of 10 from my side. Now the last product that I got from Plum is their BodyLovin body oil in the variant vanilla vibe. मेरे पास सेम वेरिएंट का बॉडी मिस्ट है जो मैं बहुत सालों से, ट्रस्ट मी, बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ एंड मैंने इसकी 6 से 7 बॉटल आराम से खाली कर चुकी है. लव द फ्रेग्रेंस ऑफ दिस बॉडी मिस्ट. सो लेट्स सी इसकी कैसी खुशबू है एंड हाउ इट वर्क्स ऑन माय स्किन. मैं कुछ ड्रॉप्स अपने पाम पे ही लूंगी. सो आई एम गोना टेक लाइक 2 to 3 ड्रॉप्स जस्ट फॉर टेस्टिंग, लाइक स्मेलिंग इट कैसी खुशबू है. मैं थोड़ा सा यहाँ रब कर देती हूँ. स्मेल एकदम सेम है मिस्ट जैसी, बहुत प्यारी खुशबू है. लेट्स रब इट इन माय हैंड्स एंड लेट्स सी ये कैसा वर्क करता है. टॉक अबाउट स्टिकीनेस, तो मुझे ना स्टिकी फील नहीं हो रहा है मेरे हाथ में. लाइक ये बहुत इजीली ब्लेंड हो गया मेरे हाथ में. लाइक यू कैन सी ये बहुत इंस्टेंटली ब्लेंड हो गया मेरे हाथ में एंड बहुत प्यारा सा ग्लो दे दिया है. या आई एम प्रीटी इम्प्रेस्ड बिकॉज ये ना हैवी नहीं लग रहा है मुझे बॉडी में. ट्रस्ट मी, हैवी बिल्कुल भी नहीं लग रहा है. इट फील्स लाइक normal body lotion but I do like it. Like it's very amazing and very moisturizing and very shiny. So yeah, and I'm gonna rate this 7 out of 10 honestly because oily तो है. Like I don't like oily skin. Oily तो है but because the fragrance and the feel it has given to my hands, I really like the product. बाकी body lotions and body oil से. So yeah, I really like it and the fragrance is so amazing. So do give it a try. And with that, we are done with today's video. I really hope you guys enjoy the video and found it really helpful. मैं हर product के लिए brutally honest थी. मुझे
प्लम के प्रोडक्ट्स वैसे ही बहुत पसंद है, थोड़ा सा बायस तो हूँ मैं, बट बायस होने के साथ में जो प्रोडक्ट मुझे पसंद है वो मुझे पसंद है, एंड आई एम नॉट लाइंग अबाउट इट बिकॉज इट इज़ आवर स्किन, एंड ऑब्वियसली मैं नहीं चाहती आपके या मेरे खुद के स्किन में कोई भी इश्यूज हुए. सो प्लम मेरी स्किन को ऐसा लगता है हील कर देता है, एंड सो आई होप आपकी स्किन को भी ये हील करे. एंड आई टोटली लव ऑल दी प्लम प्रोडक्ट्स. ऑल द products till the date I have got from Plum are so good. And yeah, with that we are done with today's video. I really hope you found the video really helpful. If you did, please hit that like button. Please share the video to your friends and family, and जिसके लिए भी ये helpful हो, and उनको भी बोलो चैनल को सब्सक्राइब कर दे. And also I'll add the coupon code for you guys to get some extra discount on Plum sale. So yeah, that's all for today. I'll see you guys on my next video. Until that, bye bye.